Pakistan's nuclearization tells you that we have tried to tell the world that our nuclear weapons are the most secure in the world. IAEA endorses it. Pakistan, Islamabad mein has a national center of excellence on nuclear security. उसके बावजूद जो narrative है वो negative है. So it probably is not only a diplomat's job or a foreign office's job to do that, but because we are just, you know, so much engrossed in ad hocness that we don't see the picture ahead. If you just look up US policy documents, so आप में से जितने लोग zombies की movies देखते हैं, they have a plan to deal with zombie apocalypse. You can laugh about it, but it is an official policy document. And you never know, in 20, 30 years down the line, you might have some zombies that US might have to actually encounter in real life. But they've thought about it. You can ridicule it, but they have thought about it. हमारे यहाँ, if you say कि जी, next 10 years, where is Pakistan headed? We are not going to have that answer. I'll just give you one example on Afghan refugees. So for the past 40 years, you know, we have this hosting Afghan refugees. But does Pakistan have a refugee policy? Does Pakistan know? सिर्फ पाकिस्तान voluntary repatriation में believe करता है, उस policy को follow करता है, उस policy को implement करता है. But if these people are not leaving Pakistan, they're not voluntarily leaving Pakistan, going back to Afghanistan, then what policy do you have to mainstream them? Are they legal citizens? What is their role in Pakistan's economy? So बातें बहुत सी हैं करने की, you know, if we deconstruct issues. But I personally believe that it's a difficult question. It is not an issue of capacity, according to my mind. I believe that Pakistan has immense potential. आप सब जो youth है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है. लेकिन आपकी energies को भी channelize करना, आपकी input लेना in broader national, not only national security policies, but also like broader foreign policies, having discussions like this, having open, free spaces to talk about Pakistan's place in the world, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है. So classrooms में बातें होती हैं, seminars, conferences में बातें होती हैं, लेकिन as a direction, you know, जब तक हम इस ad hocness में से नहीं निकलेंगे, ये जो डेली के इश्यूज डील करता है फॉरेन ऑफिस के, आज ये डील कर लो, कल ये, परसों ये, दे आर नॉट गोइंग टू हैव द टाइम टू थिंक अबाउट कि 10 years क्या करना है. आपके इमीडिएट नेबरहुड की आपने बात की, इमीडिएट नेबरहुड में two of the world's most sanctioned countries, Afghanistan and Iran. What is your policy towards them? It is easier to say कि हमें peace and security चाहिए. It's easier to say कि CPEC है, BRI है, उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए. But what are some of the concrete action plans that are going to take you to that point? So you see the point B, but from point A to point B, you don't have a roadmap. So I think there are very many challenges Pakistan has. But I would like to, you know, if there are questions regarding this, because it's a never-ending subject, so I'd like to enter. Thank you. Thank you. And I think that you've posed some very interesting questions, and especially about the ad hocness. यानी कि हमारी foreign policy शायद काफ़ी reactive है. दुनिया में क्या हो रहा है, हम उस पर react करते हैं. क्या हमारे पास एक strategic vision है? क्या हमारे पास एक coherent strategic vision है, जिसके तहत जिसकी बिना पर हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसी का जो डेली काम है वो उस विज़न को प्रमोट कर रहा है या उस विज़न तक हमें लेके जा रहा है. लेकिन आपने आखिरी बात की इमीडिएट रीजन की, इमीडिएट नेबरहुड की, तो ज़ीशान मैं आपके पास आती हूँ, एंड फील फ्री टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बट कैन यू टॉक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ चैलेंजिंग the situation in Afghanistan over the last 20 years has been for Pakistan. Particularly for me, one of the most irksome issues
in trying to explain Pakistan and helping Pakistan find space has been trying to present Pakistan as something other than AFPAC, right? So Pakistan is its own story of now 230 plus million people, its own diversity, its own history, yet we rarely get to present ourselves or have the opportunity to be perceived outside of AFPAC. So let's talk about Afghanistan, Zishan. Thank you. Yes, thank you, Azeema. Assalamu alaikum, everyone. My favorite topic, of course. Pakistan, as you know, बहुत सारे regions का हिस्सा है. We're part of CARAC, we're part of SEO. Sometimes we're considered part of MENA, which is a little strange, but it is what it is. SARC, South Africa. We've been a frontline ally for the US in the war in Afghanistan 20 साल से. हम CENTCOM का हिस्सा रहे हैं, which is the way the US military sort of looks at this particular region. But like Azeema said, I don't think that it's possible for us to talk about Pakistan without really addressing both the challenges and the opportunities that exist as far as Afghanistan is concerned. I was in Islamabad just a couple of weeks back, और एक साहब थे जिन्होंने एक बड़ा interesting जुमला कहा. उन्होंने कहा कि हमारे जो neighbors हैं, जो हमारा land border है, 91% of that land border is hostile neighbors. So think about that from a foreign policy perspective, as Dr. Rabia said, for just a second. As a country, what that actually means, sir, अगर आप समंदर को बीच में से निकाल दें, तो 91% आपके जो borders हैं, वो आपके जो neighbors हैं, वो आपको पसंद नहीं करते. और अफगानिस्तान के बारे में I think बात करना important है from a range of different perspectives. The most important among them, in my view, is infrastructure connectivity, and then second to that is interdependent market access. Afghanistan darmiyan mein hai. It's called the heart of Asia for a reason. It has the potential to connect the GCC with the Far East. It has the potential to connect Central Asia with South Asia. It's just the central location through which a lot of these sort of infrastructure projects, energy projects, connectivity projects, services projects can pass through. और एक सवाल जिससे हम, the word I think used was we're grappling with, is also now कि is the sequence of events कि अफगानिस्तान में जब security आएगी तो तब चीज़ें बेहतर होंगी और economic activity बढ़ेगी, या economic activity आएगी तो उसकी बिना पे security आएगी, या it's actually a mix of the two. कि maybe you need to start with border communities, build them up, and so on and so forth. But these are larger questions. As far as Afghanistan is concerned, I think, speaking of foreign policy, and I don't intend to wade into Dr. Rabia's territory because she's far more capable than I am. But I think आज October 15 है आज. It's been exactly 14 months since the Taliban have taken over Afghanistan, and things have not gone to plan as far as the very limited ad hocish foreign policy that Pakistan had in place. I think a lot of things have gone wrong. तीन चार बड़ी चीज़ें हैं. The first among them is the issue of the Durand line. I think that's something that Afghanistan has flagged again and again. In fact, Mujahid very recently stated that ये जो border fencing हो रही है, it's like breaking up a nation. And when he says nation, he's not speaking about Afghanistan or Pakistan. He's actually speaking about the Pashtuns, which is the central sort of ethnic group that is leveraged to make the case for how the border region needs to remain porous. There doesn't need to be a fence, and there doesn't need to be a border. The other major issue is, of course, that of facilitation, housing, as well as support for the TTP. The TTP, as you know, पिछले 7 से 8 साल में पाकिस्तान में से उनको काफ़ी ख़त्म किया गया है operations करके. But they have now found a new home inside of Afghanistan. By one estimate, there are close to 5,000 TTP fighters inside of Afghanistan, and they're primarily in the provinces, Khost में, Kunar में, जहाँ पे आपके हक्कानी नेटवर्क का जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे पाया जाता है. और तीसरी बड़ी इशू जो बीच में से निकल आई है वो ये है कि क्योंकि कोई भी मुल्क पूरी दुनिया में does not recognize Afghanistan as a nation, does not recognize the interim IEA government as legitimate, they are willing to engage with anyone. और उस engagement में जो उबर के एक बहुत बड़ा मुल्क अब सामने आ रहा है, that is India. And of course that's always going to be a problem for Pakistan from a wide variety of perspective.
Principal among them the fact कि अब जिन 16 ममालिक का कॉन्सुलेट वहाँ पे खुल रहा है उनमें से एक इंडिया भी है, और इंडिया ने अब ये भी उनको वहाँ पे ऑफर की है कि आपके जो फाइटर्स हैं, जो आपकी पुलिस फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम आपको करके दे सकते हैं. एंड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स दैट्स नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान. हमने इन तमाम चीज़ों की कल्मिनेशन देखी थी अप्रैल में, जब पाकिस्तान ने सॉर्ट ऑफ यूनिलैटरल एयर स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान के अंदर, और ये कहा था, और उसके दो ब्रॉड मकासद थे. पहला मकसद ये था टू सॉर्ट ऑफ शो द TTP दैट what they think might be a safe area inside of Afghanistan is actually not safe, and to also sort of arm twist the IEA, the interim Taliban government, the Islamic Emirate of Afghanistan, that this needs to be resolved one way or another. And the result of that, of course, was we didn't have the intended effect. In fact, we ended up killing civilians. And B, उसके साथ जो negotiations शुरू हुई, those negotiations seem to have completely stalled and not really gone anywhere. Now, take these three factors and couple with them a couple of other smaller, not smaller things, my apologies, major things that are not necessarily bilateral between Pakistan and Afghanistan. और उसमें आपकी जो principal चीज़ of course आती है, that is girls' education, which has now become a global issue, and it's a central issue around which a lot of the conversation is based. And the second major problem is inclusivity of government, and that the Afghan Taliban are not interested in bringing aboard anyone that is not a stalwart, जो उनका पुराना साथी नहीं है, उनका साथ देने वाला नहीं है. So the point being कि पिछले 14 महीनों में हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया as far as Afghanistan is concerned. हमारा ख्याल ये था कि 15 अगस्त 2021 के बाद, और उस दौरान I'm sure Azeema you remember बहुत सारी ट्वीट्स भी हुई थी कि जी हमने इंडिया को एक बहुत बड़ा बर्थडे प्रेजेंट दिया है, और इस किस्म की बातें हुई थी. और हमारा ख्याल ये था कि having a favorable government in Afghanistan would improve things and allow us to have a better standing as far as this region was concerned. But I think the reverse of that has happened, and if anything, one of the arguments made is कि जो एक पुरानी चीज़ थी जो एम्बेसडर रिचर्ड ओल्सन ने बनाई थी, कही थी एक पॉइंट पे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो उल्टा हो रहा है, स्पेशली थ्रू TTP, जिनकी डिमांड्स में से एक ये डिमांड ये भी है कि अब आप फाटा को जो है वो बेसिकली वापस करके तो अब TTP के आप हवाले करते हैं. So serious problem. It also lies at the intersection of a lot of other issues that Pakistan faces regionally and globally. Principal among them हमारा जो इस ongoing climate crisis है, जो हमारे devastating floods अभी आए थे, plus the very serious economic crisis that exists. And I would very much agree with the earlier statements that you made in that हम इस किस्म के existential crisis में और मोड में फंसे हुए हैं कि वो जो long term strategic vision और thinking और planning है वो भी exist करती नहीं है, और उसको create करना, उसकी space create करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. There's a range of solutions that we can deploy. They're very broad, and maybe I can get to them when we get to the Q&A session. But I think I'll actually stop here to allow the other August members to continue. Thank you, Zishan. And we'll definitely come back to some of the points that you've raised in a little bit. Khalid Sahab, Carrick, आपसे आज जब मेरी बात हुई, आपने कहा कि कैरेक प्रोजेक्ट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं जानते शायद. कैरेक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन एक केस स्टडी भी बन गया है कि रीजनल एंगेजमेंट क्या हो सकती है, और उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए ख़ास तौर पे जियो इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ आप सब सुन चुके होंगे. इसका क्या मतलब है और जियो इकोनॉमिक्स तक हम कैसे पहुंचते हैं. सो Khalid साहब, over to you. Let's talk about Carrick. Thank you very much. First of all, I would like to thank Indus Conclave for providing me this opportunity to share this stage with such an eminent panel. And I'm just going to explain first what Carrick is basically. Those who are familiar with the Asian Development Bank actually started some sub-regional development initiatives, and one of them is Carrick program. So Carrick stands for Central Asia Regional Economic Cooperation Program.
So CARIC program has 11 member countries. Pakistan is one of them, and other member countries are Afghanistan, China, Mongolia, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Uzbekistan, and from South Caucasus there are 2 more countries, Azerbaijan and Georgia. So these 11 member countries comprise the CARIC program. And this program is supported by the Asian Development Bank and 6 other development partners like World Bank, IMF, Asian Infrastructure Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, Islamic Development Bank, and United Nations Development Program, the UNDP. So CARIC program has 5 priority areas, 5 priority clusters on which they work with these member countries. And if we look at the investment portfolio that the CARIC program has provided to these member countries, it started in 2001, and since 2001, $41 billion of investment has gone to these member countries. And of that $41 billion, roughly 75% went into improving the infrastructure in member countries. That infrastructure includes improving our road networks, our railway networks, our energy infrastructure. And the remaining investment has gone to improving the trade facilitation and the energy sector development in these 11 member countries. And if we look at Pakistan's position in the CARIC program, Pakistan is the largest country in terms of population in the CARIC program. Why I'm saying Pakistan is the largest country, although we have China in the program, but all of China is not part of CARIC program. China's 2 autonomous regions, Inner Mongolia Autonomous Region and Xinjiang Autonomous Region, is part of the CARIC program. So we can say that Pakistan is the largest country in terms of population in the CARIC program, and is closely followed by Afghanistan and Uzbekistan as the 2nd and 3rd largest countries in the region. And if we look at the economy of this region, Kazakhstan is by far the largest economy in the CARIC region. And the total population that this region represents is 330 million people. So it's not a small kind of grouping. It's a huge grouping of population. And this region jointly produces around $650 billion of value-added GDP every year. And as I said, Kazakhstan is the largest country in terms of economy, and Pakistan is the 2nd largest country. Of course, we do not include China in this grouping because of China's asymmetric size. And as I said, China is not, whole of China is not part of this program. So if we see what Pakistan has gained from this being part of the CARIC program, Pakistan joined CARIC program in 2010. It's been now nearly 12 years that Pakistan became a member of this grouping. And since then, Pakistan has received around $1.7 billion of support from these development partners. And the projects that this program has financed in Pakistan, they include like a very interesting project, Women in Energy, gender equality, trade facilitation, streamlining our border crossing points at Cheema and Torkham. And it has also provided financial assistance to, most of you must be familiar with this Gojra Shorkot Khanewal motorway. That has been financed by the CARIC program. So this is the hard kind of support that Pakistan has received. But on the soft side, there are roughly 300 government officials coming from Ministry of Energy, Transport, Climate Change, Trade, etc. They have been trained by the CARIC program. So this is the CARIC program. Now I would like to talk basically a little bit about the CARIC Institute, which I'm representing. So I'm not representing the CARIC program, I'm representing CARIC Institute. CARIC Institute is a knowledge institute that was created to provide knowledge support to the CARIC program. So the CARIC Institute is headquartered in Urumqi.
उरुमची चाइना का एक प्रॉमिस है जिसको हम उर्दू में सिंकियांग बोलते हैं, जिसका बॉर्डर हमारे हुंजा के साथ मिलता है। उसका कैपिटल उरुमची है, उसमें बेस्ड है कैरिक इंस्टीट्यूट, और मैं कैरिक इंस्टीट्यूट के साथ काम करता हूँ और मैं कैरिक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कैरिक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिकॉज कैरिक प्रोग्राम बेसिकली इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स इन मनीला, फिलीपींस। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान कहाँ तक गेन कर सकता है, जो इसकी जो पोजीशन है विज़-अ-वी सेंट्रल एशिया, तो अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ एन एनर्जी डेफिसिट कंट्री एंड देयर आर many countries in the CARIC region which are energy surplus countries. So there are some projects that are underway, and Pakistan has a huge potential to become a regional trade hub, a maritime hub, connecting these landlocked Central Asian countries to international waters through our two ports like Gwadar and Karachi. So this CARIC program के अंदर कुछ 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, जिनमें से जो 5वां और 6ठा इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान से गुजर के अरेबियन सी में एंड होता है। एक कॉरिडोर चाइना से स्टार्ट होता है, वो ताजिकिस्तान से होता हुआ आता है, हमारे पास गवादर जाता है। दूसरा जो है वो अज़रबैजान से शुरू होता है, अज़रबैजान से शुरू होकर वो पूरा सेंट्रल एशिया को क्रॉस करके पाकिस्तान में अरेबियन सी में वो एंड होता है। इन कॉरिडोर्स का जो पर्पस था वो ये था कि हमने जो ईस्ट एशिया है उसको यूरोप से कैसे मिलाना है, उसको साउथ एशिया से कैसे मिलाना है और मिडल ईस्ट से कैसे मिलाना है। सो इन कॉरिडोर्स में पाकिस्तान की एक पिवटल पोजीशन है, अगर पाकिस्तान उसको सही लेवरेज कर सके तो। सो इस कैरिक प्रोग्राम के अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, लाइक 1-2 मिनट्स? ओके, थैंक यू। सो जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले सकता है वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर वे हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वन इज़ तरमेज़ मज़ार शरीफ काबुल एंड पेशावर रेलवे ट्रैक। ये तरमेज़ एक सिटी है उज़्बेकिस्तान का, वहाँ से रेलवे ट्रैक पे काम हो रहा है जो कि बहुत उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। इट्स 780 किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे ट्रैक जो कि अफ़गानिस्तान से गुजर के पेशावर में एंड होगा। इससे ये होगा कि उज़्बेकिस्तान और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, बिकॉज दे आर ऑल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़, और उज़्बेकिस्तान तो दुनिया में ऐसा मुल्क है, वन ऑफ 2 कंट्रीज़ जो कि डबली लैंड लॉक्ड है। सो डबल लैंड लॉक्ड कंट्री इज़ के जिसके नेबर्स भी लैंड लॉक्ड हों, तो उज़्बेकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट कंट्रीज़ आई वुड से। तो उस पे काम हो रहा है। जो अगर ये अफ़गानिस्तान की जैसे ज़िशान साहब और डॉक्टर राबिया साहब कह रही थे, अगर अफ़गानिस्तान में सिचुएशन बेहतर होती है तो प्रॉब्ली ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा। दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं कासा 1000। कासा स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एशिया साउथ एशिया। सो 2 कंट्रीज़ कैरिक रीजन की, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, उनके पास ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का, लेकिन वो सीजनल पावर है जो गर्मियों में सिर्फ हमें मिल सकता है। और आपको पता है पाकिस्तान में इतना एनर्जी क्राइसिस होता है गर्मियों में, और इंडस्ट्री शट डाउन, हमारे पास घरों में प्रोवाइड करने के लिए बिजली नहीं है। इस प्रोजेक्ट पे 15% काम हो चुका है, और थ्रू दिस प्रोजेक्ट 1300 मेगावाट एनर्जी विल बी ट्रांसपोर्टेड टू पाकिस्तान इन द स्वेल्टिंग समर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये इस इज़ अ यूनिक एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन किर्गिज़ रिपब्लिक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो टापी है, जिसको हम बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस विल बी ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे फ्राम तुर्कमेनिस्तान थ्रू अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, एंडिंग अप इन इंडिया। सो इस प्रोजेक्ट से जो 84% ऑफ एनर्जी है, दैट गैस है, वो इंडिया और पाकिस्तान लेगा, और 16% ऑफ द एनर्जी द गैस विल बी कंज्यूम्ड इन अफ़गानिस्तान, एंड आल्सो अफ़गानिस्तान विल गेट रफली $400 million of transit fee through this because of this pipeline, you know, there's a traversing Afghanistan. So but there are issues, you know, all said, I mean, we have this potential, we have huge potential, I mean, vis-a-vis Central Asia, but there are issues
as Dr. Rabia was talking about Pakistan's foreign policy, and I'm not qualified to, talk about foreign policy, but any country's foreign policy is driven by its net national value, net national strength, net national economic strength. No matter how brilliant diplomats we have in Pakistan, they can't do much because we don't have much to sell to the world. What we have to sell to the world at the end of the day is maybe some low-ended fabric, textile products, some surgical products, some mangoes and rice. A nation of more than 200 million people cannot become rich, cannot thrive if we continue selling these low-end, low-value products. So there are many issues. For example, our infrastructure is not as per international standards. The regulatory framework, I think Alisa will talk about this, is not conducive. Our bureaucratic system has to be, reformed and improved. And there are many more issues which we can talk when we get back to our, next stage. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया खालिद साहब. So, अब हम आते हैं अपने फाइनल स्पीकर अली सुल्तान साहब के पास. अली साहब, from the perspective of international law, please give us a bit of a brief on what work Pakistan has done. Where does Pakistan stand in engagement with the international legal frameworks? And is that engagement in fact connected to and reflected well in our foreign policy? If so, please tell us where, and if not, where are those gaps? Over to you. Thank you. Thank you, Azeema, for the introduction, and thank you to Punjab Group for putting together this Indus Conclave. Now, as far as international law is concerned, there are lots and lots of commitments that Pakistan owes to the rest of the global community. Whether those commitments are flowing in the form of treaties or binding agreements on Pakistan, and those could be in any area that you can possibly conceive: trade, investment, security-related treaties, and so on and so forth. And then, of course, there is this whole world of multilateral global governance frameworks which Pakistan is a party to or is a part of, whether that is the IAEA, which is relevant for the nuclear domain, or whether it is the World Trade Organization, which is relevant for international trade, whether it is International Center for the Settlement of Investment Disputes, which is relevant for investments, and so on and so forth. Then we also have bilateral commitments with different countries in the region, as well as in the immediate region, as well as in the rest of the world. So when we think of the whole expanse of Pakistan's international law commitments, it's massive in scope, if you will. So now Pakistan ideally should position itself as a responsible state which is respectful of its international law obligations. A responsible state which is respectful of its international law obligations. Now let me give you a few examples where, by not fully complying with our international law obligations, Pakistan has suffered. One of those areas is the Financial Action Task Force, where for many years we've been on the FATF grey list. And one of the reasons why we're on the FATF grey list is because we weren't fully able to harmonize our internal national laws with our international law commitments. But I'm pleased to say that the government has made a whole of government effort in the last 2 years, a very serious, sincere effort to get off the grey list, and hopefully in a week or so we should be able to exit the grey list because we have now satisfied all the technical requirements. But this is a recurring obligation on Pakistan. It's not going to end after a week. So we should, so
continuing into the future, moving into the future, we should try our best, even though we have limited capacity when it comes to international law in the government sector. But there are a few think tanks, there are students who are interested in international law. So together we can form this ecosystem. Let's call it an ecosystem of lawfare, which is strategic use of international law to advance one's foreign policy interests. So I would like to see international law capacity being boosted both in the government as well as in different educational institutions and think tanks. So that's basically, international law and how Pakistan should approach international law. Also, when it comes to our strategic communication or our narratives that we advance in front of the whole world, the more our narratives are couched in the language and idiom and phraseology of international law, the more receptive the rest of the world will be to that narrative. I'll just give you an example. Just a few days ago, at the United Nations General Assembly, there was a resolution that was passed, and the resolution condemns the annexation of eastern Ukrainian regions by Russia. Pakistan abstained because Pakistan has a principled foreign policy position, that it does not want to be a party to any blocs. But in the explanation vote, Pakistan explained that the case of Indian occupied Jammu and Kashmir is very similar to the case of Russian annexation of eastern Ukraine. And the world community needs to treat both situations alike. Otherwise, there'd be no credibility. So that is one example where we use the language of international law to rightfully seek the attention of the global community. So let's hope that we get some traction on this. Now, just a couple of points that I would like to make and perhaps endorse if they've already been stated. Look, we've been having this debate about foreign policy, ad hocism, and so on and so forth. That's true. But I should like to remind you that just last year, the Pakistani government undertook this initiative of drafting our first national security policy, which is going to be in force from 2022 to 2026. And that is a strategic document which talks about regional partnerships, development partnerships, and places geoeconomics at the heart of policy making. Because at the end of the day, as Umar Sahib rightly pointed out, foreign policy begins at home. If we are internally divided, if we are bickering internally, and if there is so much toxicity in our political system, it's obviously going to have a knock-on effect on our foreign policy, and also in terms of realizing our true economic potential. Because, look, this isn't rocket science. If you want to be influential in the world, in the community of states, you need to be an economic stronghold. You need to be an economic powerhouse. Now, we can, of course, debate how we can get to being a geoeconomic power. But at least there is now a realization within the government that the way forward is geoeconomics. So let's hope that we can keep marching ahead on that front. The other thing is that there are certain external factors that will also determine Pakistan's position in the world. The central issue in the international system right now is the unfolding Cold War between China and the United States. That, of course, is going to have an enormous impact on not just Pakistan, but on many, many other countries and regions of the world.
So moving forward, we'll have to find a way of intelligently navigating through the thicket of challenges that will arise as a result of this, this Cold War, which is unfortunately going to get worse in the, in the coming years. And lastly, of course, we need to remember that Pakistan is situated in a very, very difficult neighborhood. That is why South Asia is the least integrated region of the world. Our major trading partners are not our immediate neighbors. They are the United States, 6 billion worth of exports to the United States, then China, and then we have the UK, Germany, and so on and so forth. So we can't ignore these facts, right? And we need to think rationally, rationally about these issues, not with a lot of emotions, but with a lot of rationality and common sense. And yes, in this difficult neighborhood, what happens in India, we already know that there is rising right-wing extremist forces in India. That, of course, is going to affect Pakistan's position in the region and Pakistan's relationship with India. We're talking about a country which fired a BrahMos missile into our territory and then later on called it as just an accident, and is now not even willing to share findings of the joint report, the so-called report, internal report that they conducted. So these are serious challenges. And then, of course, Afghanistan. Pakistan has always stood for stability in Afghanistan because we understand that our economic fortunes are linked to stability in Afghanistan. So these are some of the things that I thought I should share with you, and we can move forward in the question and answers. Thank you. Thank you, Ali Saab. That was quite forcefully put. And, I have a lot of sympathy for the young audience. एक तरफ उनको बताया जा रहा है कि geo-economics, the future is in geo-economics. दूसरी तरफ उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की economic offering इस वक्त कुछ खास है नहीं. तीसरी तरफ उनको ये बताया जा रहा है कि आपके जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो वेस्ट में हैं. चौथी बात जो उनको बताई नहीं जा रही लेकिन वो हमें बता रहे हैं is this constant defiance against the West. This idea that we want to stand up for ourselves. So I think one of the missing aspects to bring back into this conversation is the mood of the Pakistani public. That used to be my job. I used to be somebody who used to collect data on public opinion. So I'm always very mindful of Pakistani public opinion. What I see a lot of is that आपकी जो ख़ास तौर पे जनरेशन है उसने तो 20 साल ये देखा है कि पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव से नेगेटिव, आपकी शायद सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, और उसमें इंटरनेशनल मीडिया में हमारे बारे में नेगेटिव के बाद नेगेटिव के बाद नेगेटिव स्टोरी छपती जा रही है. हमारी रियासत ने, और राबिया ने इसकी तरफ इशारा भी किया था, हमारी रियासत के पास वो वसाइल नहीं हैं कि रियासत हमारी कहानी सुना सके दुनिया को. तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. अली साहब ने बहुत एक क्लियर बात की जो राबिया ने शुरू में मिसाल दी थी कि बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान is the most dangerous nuclear state without any cohesion, right? Cohesion का मतलब social solidarity, social conflict बहुत ज़्यादा है internal. ये नई कहानी नहीं है, ये एक पुरानी कहानी है पाकिस्तान के बारे में जो हमें पाकिस्तान के बाहर से लोग सुना रहे हैं.
लेकिन क्या हमने अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की है कि नहीं? तो डिफायंस तो मुझे नज़र आ रही है पाकिस्तान के यूथ्स की, लेकिन मैं बार बार उनको ये कहना चाहती हूँ कि बेटा डिफायंस इज़ अ मूड, डिफायंस इज़ अ मूड, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। और बार बार जब भी आप कोशिश करते हैं कुछ करने की यहाँ, तो आपको कहा जाता है बेटा वो काम छोड़ो, नेशनलिज्म पे काम करो। और ये एक दौर है मल्टीपल आइडेंटिटीज़ का। तो ठीक है, आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, लेकिन आपकी एक एथनिक आइडेंटिटी भी है, आपकी एक माइक्रो आइडेंटिटी भी है, लेकिन उसके साथ आपकी एक ग्लोबल आइडेंटिटी पे भी है। तो बेटा नेशनलिज्म पे काम करो, लेकिन इंटरनेशनलिज्म पे भी आप काम करो। और उसके लिए ये सारी कॉन्ट्रडिक्टिंग रियलिटीज़ जो हमारे पैनलिस्ट ने हमारे सामने डाली हैं, वो आपको एक साथ समझनी पड़ेंगी, और इनका ये जो एक पज़ल है ये किसी तरह फिट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हर पैनलिस्ट ने सच बोला है। तो इतने मसाइल को आप इकट्ठे कैसे लेके चलेंगे? अगर ऑडियंस की तरफ से एक दो क्वेश्चंस हैं तो हम अभी ले सकते हैं, हमारे पास वक्त है हमारे पैनलिस्ट के लिए, बिकॉज यू आर द ओनली वन आई कैन सी बिकॉज ऑफ दिस लाइटिंग। बोलिए। Assalamu alaikum. My name is Naseemullah. I am the student of Government College University, Lahore. My question is from Madam Dr. Rabia Akhtar. मैडम, आपने जो कोट किया प्रेसिडेंट बाइडेन साहब का कि बाइडेन साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है नेशनल कोहेजन और जो एटॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान इज़ अ वेरी डेंजरस कंट्री। तो मैम, अमेरिका ने बार बार सारी दुनिया में अगर हम देख ले, अबाउट 90+ कंट्रीज़ में अमेरिका ने मिलिट्रली इन्वॉल्वमेंट की है। जॉन एफ कैनेडी ने अयूब खान को स्पॉन्सर किया, प्रेसिडेंट निक्सन ने यहिया खान को स्पॉन्सर किया, रेगन ने जनरल ज़िया को स्पॉन्सर किया, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुशर्रफ को स्पॉन्सर किया। और बिहाइंड द कर्टन जो कि डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, इसी तरह लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ने, लाइक इन गुतमाला, इन वेनेजुएला, बेटा सवाल, यस सर, सवाल। ओके, इन पनामा अमेरिका ने मैसअप कर दिया है सारी दुनिया में। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा रॉज स्टेट है? क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेट है? और अगर मैं दूसरा सवाल ज़ीशान साहब से कर सकता हूँ, एक 20 सेकंड दे दें। अच्छा, तो आपने टीटीपी की बात की कि टीटीपी, तो मैं क्या हम कह सकते हैं कि टीटीपी जो है ये हम कह सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स है पाकिस्तान के, लाइक दे आर, जो हक्कानी नेटवर्क है अफगानिस्तान का, वो जो शियाज जो स्कूल्स है, मकतब है, उनको टारगेट कर रहा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि टीटीपी के जो लीडर्स हैं वो साउथ वजीरिस्तान में आर्मी कैंट से निकलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ आ गया। थैंक यू सो मच। सेक्टेरियनिज्म और टीटीपी। so much for your question. हम बिल्कुल कह सकते हैं कि US इस दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्री है, but the fact is कि US एक सुपर पावर है। so जब हम ऐसी स्टेटमेंट्स, हिस्ट्री हमारे सामने है, इतनी हिस्ट्री ऑफ वॉर्स है, इस पूरी दुनिया में उनकी प्रेजेंस है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को, वर्ल्ड बैंक को, IMF को। सो जब एक कंट्री इतनी ताकतवर होती है तो वो वर्ल्ड ऑर्डर सेट करती है, अनफॉर्चुनेटली। और हम जैसी कंट्रीज़ जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा हैं और फॉलो करती हैं जो ऑर्डर सेट हुआ हुआ है। सो पाकिस्तान के बारे में ये बात उन्होंने
आज पहली दफ़ा नहीं की है, बहुत सालों से, जब से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी आई है तब से पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट कोहेजन की है, ये मेरी आपसे पहले भी रिक्वेस्ट थी कि आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करें। इज़ इट टूवर्ड्स सोशल अनरेस्ट जो नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को पोस्ट मार्च अर्लियर दिस ईयर, या ये आपके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल की तरफ इशारा है, वो जो कि एक सिस्टम पूरी दुनिया मानती है कि सेफ़ एंड सिक्योर है। सो आई थिंक जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं पॉलिटिकली, मेरे नज़रिए के मुताबिक ये स्टेटमेंट उसकी तरफ इशारा है कि अगर सिविल अनरेस्ट होता है पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली सारे इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब बाय इट, ठीक है। सो पाकिस्तान नीड्स टू पुट इट्स पॉलिटिकल हाउस इन ऑर्डर, और पाकिस्तान नीड्स टू फिगर आउट कि जो पीस एंड सिक्योरिटी विद इन द कंट्री है वो किस तरह से मैनेज की जाए। तो ये स्टेटमेंट एक आइसोलेटेड स्टेटमेंट है, उनके अपने कॉग्निटिव इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं बाइडेन साहब के, उनकी उम्र के हिसाब से। सो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है स्टेटमेंट से। वी हैव अ लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स आउट देयर विच से कि पाकिस्तान का ओवरऑल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का न्यूक्लियर निज़ाम है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। सो ये इशारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ। थैंक यू जी। और इसका जवाब अली सुल्तान साहब ने भी दिया है। एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल किसी और फौज की लापरवाही या अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से पाकिस्तान में गिरा है, और उस माहौल में अगर फिर भी एक दूसरा मुल्क रिकग्नाइज नहीं हो रहा एज अ डेंजरस कंट्री, तो ये हमारी पीआर का कसूर है। सो with that, Zishan, we're at the end, unfortunately, of our Q&A time as per the organizers. If you could do a quick comment on the question, and we will close. Sure, I'll keep it very brief. To answer your question, it's absolutely non-state actor. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये एक established fact है. The TTP is in fact not just a non-state actor. By definition, it is actually also a proscribed organization by the government of Pakistan, as in the state considers it kaladam जिसे करार दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है, तो वो that's not really the question. The real question here is, how is it that a group that is actively engaged in non-state activities, that is a jihadist project that wants to enforce Sharia-based a political system inside of the country that is also proscribed, the members of which are on the fourth schedule, we are negotiating with? That's the question we sort of, especially the youth of Pakistan. You know that we have somewhere around 234 million people in Pakistan. The median age is 23. That means कि आधी population 117 million जो है वो 23 से नीचे है, और youth को इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा सोचना चाहिए, especially as far as this particular point is concerned. क्योंकि and I'll end it here. As far as I'm concerned, हमारे लिए everything that is happening with the TTP has to end with one simple solution, and that is the complete dismantlement and disarmament of that unit. That's it. हमारे लिए और कोई option नहीं है. थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस का, बहुत शुक्रिया हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, और बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट्स का। There is one last question and it's from a lady. Do we have time? Please, madam, go ahead. My name is Rashta Abbas, and I'm lucky enough, I'm under supervision of Dr. Rabia, but my question is to Ali Sultan sir. आपने अभी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो डिस्प्यूट इक्सिट की बात की है कि पाकिस्तान के साथ इनकी काफ़ी जो ट्रीटीज़ वगैरह हैं या कंप्लायंस के इश्यूज होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि थिंक टैंक्स या जितने भी ये जो डिसीजन मेकर्स हैं ये किधर होते हैं जब हम ये सब ट्रीटीज़ साइन करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने रेक्टिफाई किया इक्सिट को भी, और उसके बाइस होने की वजह से हमें रेकोडिक में भी काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ पड़ी, जबकि इंडिया ने नहीं किया रेक्टिफाई। इसी तरह बायोलेटरल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं उनमें हमें अब बैकआउट करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें बाद में हमें समझ आई कि नहीं ये गलत ट्रीटीज़ थी। तो इनको इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या हम जो ट्रीटी को अंडरस्टैंड करके रेक्टिफाई क्यों नहीं करते? थैंक यू।
That's a very good question, and that's why I talked about capacity building as far as international law is concerned. So you need people in the government who can properly vet these treaties. That was not done while we were signing these bilateral investment treaties in the 1990s. They were mostly done for photo opportunities, foreign trips going to these various countries. But now at least we've realized that we have to renegotiate these bilateral investment treaties. So right now we're in the process of withdrawing from these bilateral investment treaties and hopefully renegotiating new ones. And the other thing is that, Rico Dick, Karke, all of these cases, it's not just international law which caught us out. It was also our domestic courts, including the Supreme Court of Pakistan, during the Iftikhar Chaudhry years. That judgment, the Rico Dick judgment, was just very unfortunate. And so that's how I would respond. But good question. Capacity building, more focus on international law, better appreciation for international law is the way to go. Thank you for that very practical answer. I see some other hands, but I hope that the panelists will stick around and maybe the people who want to ask those questions will ask them directly. But that concludes the time for our panel. Thank you very much for your participation. मेरी उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आगे आप लोग लेके जाएंगे और इसको आगे और इन ख्यालात को आगे बढ़ाएंगे. So thank you very much to the Punjab Group, and we hope for the next rendition of the Indus Conclave. मेरा नाम अजीमा चीमा है. मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़. Thank you.